Hello students, good morning. How are you all? So I hope you all are fine. Okay students, in the last lecture we completed our chapter number 15, statistics. Today I'm going to start you a new chapter, chapter number 9, sequence and series. This chapter is important for our syllabus also and also for our JEE. Understand? So this chapter is most important for us. So let's start our new chapter, chapter number 9, sequence and series. First of all, we have to see what is sequence. So the definition of sequence is a function f whose domain is capital N is called a sequence. Okay students, so we have a one function. Okay, so we have a one function f from A to B. Suppose we have a one function f from A to B. For example, f from A to B. So in which capital A is capital N. Okay, so the domain of this function, that means f is capital N. If it is capital N, then we say that the given function is a sequence. समझ में आ गया? अगर हमारा जो भी फंक्शन होगा, बराबर, एक्स वाई जेड हमारा फंक्शन होगा, उसका डोमेन मतलब जो हमारा फर्स्ट प्लेस पर जो हमारा जो भी होगा, बराबर, कोई भी any set in a first place which is a capital N, that means set of natural number, then we must say that that function is a sequence. तो सीक्वेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई क्या है? सिंपली आपको ये समझना है कि जो हमारा फर्स्ट प्लेस पर जो भी सेट होगा, बराबर, f from A to B है, then the place of A, मतलब जो A का जो प्लेस है ना, वो क्या होना चाहिए? हमारा सेट ऑफ कैपिटल N, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बराबर, वो होगा तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? उस फंक्शन हम सीक्वेंस बोलेंगे, मतलब वो क्या होगा? हमारा सीक्वेंस होगा. So I hope कि आपको समझ में आ गया है what is sequence. A function whose domain is capital N is called a sequence. Okay. So depending on this definition, we have a remark. So remark, f from n to n where fn is equal to 2n plus 1, then fn is called nth term of the sequence. It is denoted by f of n, tn, small tn, small an, un. Most probably we use in a 10th standard. Okay, we already use in a 10th standard this symbol. Okay, we already use in a 10th standard this symbol, but most probably we use in our this chapter, that means in the chapter number 9, standard 11, we use small an. So this sign we use in our chapter number 9. Okay, so we have this kind of symbols for our nth term. Okay, so we have f from n to n where fn is equal to 2n plus 1. We have given this function in which fn is called nth term of the sequence. Why nth term of the sequence? Because if we put n is equals to 1, okay, we take one by one elements from our domain. That means our set of natural numbers. That means what is the set of natural numbers? That means we have 1, 2, 3, up to ... so on. So we take a first element, that means n is equal to 1, and put in this function. We get f of 1, that means 2 into 1 plus 1, that means we get finally 3. So the first element, that means first term, we get 3. Okay. Second, if we want to find second term, that means we have to put n is equal to 2 in this function. So we get f of 2 is equals to 2 into 2 plus 1, we get 5. Similarly, if you put one by one the values of n in this function, you get the number of terms in a ascending order. First term, second term, third term, fourth term, up to so on. So I hope you understand. So this is the general form of our sequence. Understand? This is the general form. That means I must say that this is the nth term of our sequence. Okay, so f of n is the nth term of the sequence. I hope you understand. Okay, so the next definition is a finite sequence. What is the definition of finite sequence? Which is a sequence containing a finite number of elements in a domain. That means if we have a function f from A to B, okay, then A is a countable. Then the set capital A is a countable. For example, in a class, suppose in our class 11th standard English medium, in our class there are 50 students. Okay, how we say that there are 50 students? Because
we counting, okay, because these are countable, because हम काउंट कर सकते हैं कि हमारे क्लास में 50 स्टूडेंट्स है या 40 स्टूडेंट्स है, बराबर। वो हम एग्जैक्टली कैसे कह सकते हैं, क्यों हम इतना श्योर है कि हमारे क्लास में 50 स्टूडेंट्स है या 40 स्टूडेंट्स है, बिकॉज ऑफ वी काउंटेबल, बराबर, क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं इसलिए 1 2 3 4 5 अप टू 50, बराबर। तो फाइनाइट सीक्वेंस किसको बोलेंगे, जिसका डोमेन कौन सा, जो भी हमारा फंक्शन होगा जिसका डोमेन काउंटेबल होगा। काउंटेबल दैट मींस वी हैव टू काउंट दैट सेट, okay, for example f from 1 2 3 to capital R is a finite sequence. Why this is a finite sequence? Because we know that in a domain there are 3 elements. Okay, how we say that? Because we see that in a domain there are 3 elements and also we count these 3 elements. Okay, so this is called, that means you have to focus on our domain. Understand? So जिसका जो भी फंक्शन का डोमेन काउंटेबल होगा, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन में दिए जाएंगे, so that function is called a finite sequence. And similarly what is infinite sequence, which is not finite, same as, understand, that means a function containing n, that means n elements, for example set of natural number elements, बराबर ना, which is not countable, जो काउंटेबल नहीं कर सकते, for example the hair in our head or the stars in a sky, समझ में आता है, बराबर ना। अगर हम हमारे जो हेड में जितने भी हेयर्स है वो काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। सिमिलरली स्टार्स काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सिमिलरली सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, they all are uncountable, because we know that in a capital R there are infinitely many elements, similarly in a set there are infinitely many elements, and similarly in a capital N infinitely many elements. So a sequence is called infinite if it is not finite sequence. For example f from n to n is an infinite sequence. दिख रहा है यहाँ पे डोमेन क्या है हमारा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल n है, which is uncountable, समझ में आ रहा है, which is uncountable. So this is called an infinite sequence. So I think आपको समझ में आ गया what is sequence, what is infinite sequence and what is finite sequence. So depending on this topic, now we have to see our examples. अब हम examples देखने वाले हैं. Okay students, तब तक ये जितने भी formulas है एक बार या definition एक बार पढ़ लो. Okay, so the first type number 1, depending on our sequence topic. What is we have to find, write the first 5 terms of each of the following sequences. So I introduce first term depending on our type number 1, which is exercise 9.1. First sum an is equals to n into n plus 2. जैसा कि मैंने अभी आपको बोला थोड़ी देर पहले कि हम हमारा जो साइन है, बराबर, nth टर्म वाला जो साइन है, बराबर, उसको हम क्या यूज करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली an यूज करेंगे, बराबर। 10th स्टैंडर्ड में आपने जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, बराबर ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने चैप्टर नंबर 15 आई थिंक वो सॉरी 5, चैप्टर नंबर 5 था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th स्टैंडर्ड में, जिसमें आपने पढ़ा होगा, तो आपने वहां पे कौन सा nth टर्म यूज किया, तो tn यूज किया था। tn दैट मींस nth टर्म and an means similarly nth term. So we have given an nth term of the sequence which is n plus 2 and we have to find first 5 terms. That means first 5 terms मतलब हम number of terms कहां से सिलेक्ट करेंगे, set of natural number में से सिलेक्ट करेंगे. So first term is n is equal to 1, second n is equal to 2, similarly 3, 4 and 5. Okay, so taking 5 elements from our set of natural numbers and put all the elements one by one in this our nth term of the sequence. So we have answer here given sequence which is an is equals to n plus 2, result number 1. Now for n is equals to 1 implies a1 is equals to, समझ में आ गया क्या करना है हमें, जहां पे भी n दिखता है आपको वहां आपको n is equal to 1 पुट कर देना है। आपको यहाँ पे n दिखा है तो a1 आ गया। सिमिलरली on RHS side we changes 1 into 1 plus 2, that means finally we get 3. So हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा आया, 3 आया। सिमिलरली for n is equals to 2, so 1 implies a2 is equals to 2 into bracket 2 plus 2. So 2 plus 2 we get 4 to the finally 8. Similarly for n is equals to 3. So 1 implies we get 8, 3. Put
n is equal to 3 in RHS side, 3 into bracket 3 plus 2, finally we get 5 3s are 15. Now for n is equals to 4, 1 implies we get a 4 is equals to 4 into bracket 4 plus 2, that means 6 4s are 24. And finally for n is equals to 5, 1 implies a5 is equals to 5 into bracket 5 plus 2, that means 7 into 5 we get 35. So this is your required first 5 terms of the given sequence an is equal to n plus 2. Hope you understand. Okay, जो भी हमें क्वेश्चन में हमारा सीक्वेंस nth टर्म मतलब nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस हमें दिया जाएगा क्वेश्चन में, an की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा, बराबर, और आपको पूछा जाएगा कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स या फाइंड द फर्स्ट 6 टर्म्स या व्हाटएवर जितने भी टर्म्स आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे तो आपको उतनी n की वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमने फर्स्ट 5 टर्म्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से हमने निकाल लिए 1 2 3 4 5 और इसमें हमने पुट कर दिए। So finally we get 2 3 15 2 8 15 24 and 35. Hence the required first 5 terms which is 3 8 15 24 35 respectively. Okay, any questions, any doubts, any confusion? I hope कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई डाउट्स नहीं होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज वेरी इजी सम है, इसमें सिर्फ आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही करना है। ओके, सो ये एक सम मैंने आपको समझा दिया, अभी आपको जितने भी सम्स आएंगे वो सब आपको होमवर्क में करना है। गॉट इट? ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया कैसे हमें 5 टर्म्स फाइंड आउट करना है। सेम एज डिपेंडिंग ऑन आवर प्रीवियस सम वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सम्स जो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। ओके, ये सभी सम्स आपको कंप्लीट करने हैं होमवर्क में, समझ में आ गया? ओके, जहां पे भी आपको n दिखेगा वहां पे आपको सिर्फ 1 2 3 4 एंड 5 वन बाय वन आपको सबसे पुट करना है। ये तो इसे ये 2 1 2 2 3 4 5 यहां पे वैल्यू पुट करना है। यहां पे 1 यहां पे n के रिप्लेस में 1 2 3 4 5 और उसके बाद आपको सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तो आता ही है, बराबर ना? उसके बाद यहां पे भी n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 वन बाय वन आपको पुट करना है। सिमिलरली यहाँ पे ये टीम का सम मतलब हमारे घर का सम है, बराबर, ये बुक का सम नहीं है। सो ये एक सम मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। सो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 मतलब 1 माइनस 1 रेज़ टू 1 we get 1 because -1 रेज़ टू if we have -1 रेज़ टू even number then we get 1 and if we have -1 रेज़ टू odd number we get -1। सो यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे -1 आएगा, 2 होगा तो +1 आएगा और उसके हिसाब से आपको चेंजेस करना है। यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा और अगर इवन नंबर होगा तो बीच में माइनस ही रहेगा क्योंकि -1 रेज़ टू we get 1 और बाय 2 तो है। सिमिलरली यहाँ पे आपको केयरफुली काम करना पड़ेगा क्योंकि 1 minus 1 we get 0, -1 raised to 0 we know that any number raised to 0 or any variable whatever raised to 0 we get 1. So 5 raised to 1 plus 1 we get 2, 5 raised to 2 that means 25. If we put n is equal to 2 here, 2 minus 1 we get 1, so -1 raised to 1 we get -1. So 2 plus 1 3, 5 raised to 3 that means 125. So final answer we get -125. First answer हमें क्या मिला? First term 25, second हमें मिला -125. Similarly, if you put n is equal to 3 here, 3 minus 1 we get -1 raised to 2. Final we get 1. And here 5 raised to 3 plus 1 that means 4. 5 raised to 4 that means 625. So we get plus 625. Final answer. So और ये एग्जांपल हम जो एग्जांपल 1 है उसमें दो एग्जाम्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। ओके, सो ये जितने भी आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है सभी के सभी जितने भी हमारे पास an है, जितने भी हमारे nth टर्म्स है 3 5 एंड 8, सो ये 8 टर्म्स के आपको फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। हो जाएंगे ना होमवर्क में? श्योर? लॉक किया जाए? अंडरस्टैंड? साइकिल स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, ऑल स्टैंड। चलो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? सो 9.1 का 7th सम है। अभी जितने भी हम सब अभी करेंगे ना तो उसमें क्या होगा, तो आपको
कौन सा भी टर्म आपको फाइंड आउट करना होगा, बराबर। तो वो टर्म आपको स्पेसिफाई किया जाएगा क्वेश्चन में। ओके, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करना है या फर्स्ट 7 या 6 व्हाटएवर, बराबर। यहाँ पे आपको जो भी टर्म फाइंड करना होगा ना वो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाएगा। यू हैव यूज, बराबर। ये हमारा क्वेश्चन है an is equal to 4n minus 3, find a17 and a24, मतलब we have to find 17th term and 24th term, मतलब हमें सिर्फ दो टर्म ही फाइंड करना है जो हमें क्वेश्चन में बोला गया वो। ओके, सो यहाँ पे आपको फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट नहीं करने हैं। क्लियर, समझ में आ गया? क्वेश्चन में हमें जितने भी टर्म्स पूछा गया होगा तो उतने हमें टर्म फाइंड आउट करना है। ओके, समझ में आ गया? तो लेट स्टार्ट आवर दिस सम आंसर हियर। The given sequence an is equals to 4n minus 3, result number 1. Okay, now for n is equals to 17, 1 implies a17 is equals to 4 into 17 minus 3. So finally we get 68 minus 3. So finally we get a17 is equals to 65. And for n is equals to 24, 1 implies a24 is equals to 4 into 24 minus 3. 24 into 48, 96. So 96 minus 3. So finally we get a24 is equals to 93. क्या है? बस यही है, सिंपल। समझ में आ गया? इजी है ना सम्स? बस तो यही सम्स आपको कंप्लीट करना है। अभी जितने भी एक मैंने समझा दिया, अभी डिपेंडिंग ऑन दिस सम्स आई विल गिव यू इन अ होमवर्क, बराबर। वो मैं सभी आपको होमवर्क में दे दूंगा। सो कैसा लगा ये सम्स? मजा आया? इजी है ना? ओके, सो आपको जो भी टर्म फाइंड आउट करना होगा ना वो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाएगा, बराबर ना। तो क्वेश्चन बराबर रीड करना है आपको, बराबर। अगर आपको सीक्वेंस दिखा और आपने फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट किया तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चन प्रॉपर्ली रीड करना पड़ेगा, बराबर। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली रीड करना पड़ेगा। आफ्टर देन यू हैव टू फाइंड योर व्हिच टर्म जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला होगा वो। सो आई थिंक ये इजी सम समझ में आ गया होगा। सो ये सब एक बार देख लो, समझ लो, सीख लो, क्योंकि इस पर डिपेंडिंग मैं अभी आपको क्या होमवर्क में देने वाला हूं, अंडरस्टैंड? ओके, सो कैसा लगा ये सम अभी हमने जो प्रीवियस देखा, जिसमें आपको दो टर्म फाइंड आउट करने थे जो आपको स्पेसिफाई किया गया था, a17 and a24 फाइंड आउट करना था। सो डिपेंडिंग ऑन दैट सम वी हैव अनदर 4 sums, 9.18 sums, 9.18, 9.19, 9.10 and example number 2. So in which an is equal to n square upon 2 raised to n, find a7 and a10, मतलब n के रिप्लेस में आपको 7 पुट करना है, उसके बाद 10 पुट करना है। अब अगर आप बुक में देखेंगे ना तो कोई भी एक ही टर्म फाइंड आउट करने को बोला था, उसके अलावा जो दूसरा है वो मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, बराबर ना। एक्स्ट्रा आपको फाइंड आउट करना है। सो आप बुक में देखिए ना कि इसमें से कौन सा वाला टर्म फाइंड आउट करना था बुक में, बराबर। मतलब हमारे जो बुक है ना, एनसीईआरटी की बुक है हमारा, बराबर। तो उसमें आपको ये देख लेना है कि a7 या a10 कौन सा नंबर आपको फाइंड आउट करना है, कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है। उसके अलावा जो होगा वो आपका एक्स्ट्रा टर्म होगा, बराबर। सिमिलरली 9.19 an is equal to -1 is to n minus 1 n cube, find a9 a10, इसमें से भी कोई एक टर्म आपको फाइंड आउट करना है बुक में, बराबर। और एक मैंने आपको एक्स्ट्रा दिया है। सो आपको n के रिप्लेस में फर्स्ट 9 पुट करना है, उसके बाद 10 पुट करना है। सिमिलरली 9.110 we have an is equal to n minus 2 divided by n plus 3, find a10 and a20, इसमें भी कोई भी एक ही टर्म फाइंड आउट करना है, या तो a10 या तो a20, जो भी टर्म आपको फाइंड आउट करना है। उसके अलावा जो दूसरा होगा वो मैं आपको होमवर्क में दिया है। एंड सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2, an is equal to this, find a10 and a20। सो ये 4 सम है जो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है, एकदम शांति से करना, बराबर। उतावल जरा भी नहीं है हमें, बराबर ना। समझ में आ रहा है? ओके, सो कैलकुलेशन प्रॉपर करना। डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन का रूल है। पावर्स a⁻n वाला भी वो भी आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट सम में। उसके बाद -1 वाला वो भी आपको कैलकुलेट करना है। फिर डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्ट, सभी रूल्स आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। सो आई होप ये 4 आप सब कंप्लीट कर दोगे, मुझे आप पे भरोसा है। ओके, आई ट्रस्ट ऑन यू। एंड जो फर्स्ट जो देखा हमने, फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करना, उस पर डिपेंडिंग मैंने आपको 8 सम्स दिए और इस पर डिपेंडिंग 4, दैट मींस यू गेट 12 सम्स इन अ होमवर्क। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम जब मिलेंगे तब तक के लिए आपको ये सम्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। ओके, सो जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स जाएंगे ना स्टूडेंट्स, वैसे वैसे आप अपना होमवर्क भी कंप्लीट करते रहना, बराबर।
कुछ कोई ऐसा ना हो जाए कि एग्जाम नजदीक आ जाए और आपके ऊपर बर्डन ज्यादा हो जाए, बराबर। एक साथ, बराबर ना, अगर थाली में आपको परोसा है तो आप धीरे धीरे खाओगे तो ही वो डाइजेस्ट होगा, बराबर। एक ही साथ तो सभी तो नहीं मिलेगा, बराबर। सबसे पहले आप सब्जी रोटी खाएंगे, बराबर, उसके बाद आप राइस प्रीफर करेंगे और आफ्टर देन डिजर्ट, बराबर ना, समझ में आ गया। सो इसी तरह आपको ये भी करना है। सबसे पहले आपको ये आपकी रोटी सब्जी है, ये आपको हजम करना है, डाइजेस्ट करना है, उसके बाद आपके पास राइस आएगा, बराबर ना। जैसे जैसे आपको लेक्चर जाएंगे वैसे वैसे आप कंप्लीट करते रहना। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।